एब्सोल्युटली। देन जैसे आपने बताया है कि आपका ऑप्शनल फिलॉसफी रहा है, तो जिसको हिंदी में हम दर्शन भी कहते हैं। फिलॉसफी में एक एग्जिस्टेंशलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हाइडेगर एक कॉन्सेप्ट देते हैं अब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, दैट मैन्स लाइफ इज लाइक अ राफ्ट इन द ओपन सी। कि जो इंसान है वो अपनी ज़िंदगी की अब्सर्डिटी से परेशान होता है, और जो इमिनेंट डेथ है, बीइंग इनटू लाइफ एंड बीइंग इनटू डेथ की बात करते हैं वो, कि we feel that, वो कहते हैं ना कि someone tells that a person who has been diagnosed with cancer, and one morning someone asks, how do you feel that you are dying? And she responds that, what makes you feel that you are not? So what is the idea of life if we were to delve deeper into the existentialist ideas of existence? What do you think? Again, it is a very subjective interpretation. Philosophy itself says that there is no one absolute idea. I believe that the whole purpose of life is to add some value to yourself and to the people around you, and leave a positive mark, not in terms of what the material world says, but like imprinting yourselves in the hearts and minds of people. Yes, life is a raft in the open sea. There will be challenges. दुख भी आएंगे, दुविधाएं भी आएंगी, बट डिस्पाइट दैट लाइफ विल गो ऑन। तो आई थिंक जो ह्यूमन लाइफ का एसेंस है वो ये है कि अपने आप को एक उस दिशा में लेके जाना है जहां से आपको चीजें जो आपके दिमाग पे, आपके जहन पे फर्क डालती हैं, वो धीरे धीरे आपको उससे ऊपर उठने की कोशिश करनी है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू make yourself so immune to things that your peace of mind is not disturbed. So I think अगर आप बात करें जिंदगी की, तो जिंदगी का एम है कि एक पीसफुल एग्जिस्टेंस की तरफ हम बढ़ें, और जब हम पीसफुल एग्जिस्टेंस की तरफ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हम एक लास्टिंग इम्पैक्ट जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके जीवन में लाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने ये बात कही कि देयर इज नो एब्सोल्यूट आइडिया, and taking this conversation forward, the concept of Anekantwad is in Jainism. They explain this example of multiple ideas through the example of the tail of the elephant and the blind man and the elephant. That a blind man sees a different part of the elephant and thinks that is the elephant. We are all those blind men. I believe the allegory of the cave Plato has also said the same thing. That our conception of the world is limited to what we can see, because we human intellect is limited, so to say, and it is the extension of human, the cogitation that we have, the extension of that ability of cogitation to realms that far exceed human consciousness. And when we delve deeper into these ideas, we understand that what we were 5 years ago and what we are today may be different, and what we will be 5 years from now will be entirely different. Because the atom that we are made of today, the place that we are existing today, 100 years now from now, this place may be inhabited by somebody else. The atoms that make us may be flying somewhere into the cosmos. So absolutely correct that there is no absolute idea. You have to find your own thing, and that's how you evolve as a person.